मिसाइल था और अब इसकी टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस्ड है, क्या है, उसके ऊपर हम थोड़ा सा मज़ीद काम करेंगे। ये इनिशियल इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको दी है। आपने जो दूसरी बात की, मैं कोई क्या कह रहा है, मैंने बार बार ये कहा है कि अगर किसी को ये शक है या किसी का ये ख्याल है कि हमारी तरफ से कुछ हो रहा है, तो उसका कोई एविडेंस होगा, उसका कोई प्रूफ होगा। और अगर ऐसी कोई चीज़ आज तक तो कोई सामने नहीं लाया, सो दैट मीन्स मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फिर उनसे सवाल करें बजाय इसके कि आप मुझसे सवाल करें। मैं तो आपको अपना जवाब दे चुका हूँ, कई मरतबा दे चुका हूँ। सो प्लीज़ आस्क द पीपल हु आर पॉइंटिंग फिंगर्स एंड क्लेमिंग। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। थैंक यू। मुमताज़ भट्टी सर। मुमताज़ भट्टी साहब, दिन टीवी से। सर, एक तो ये कि जो आप दोस्त का मामला हुआ, फिर ये एयर में ये जो मिसाइल आया, उसके बाद आप 3 साइड पे बिल्ड अप एक मौजूद है इंडिया में, हमारे LOC के गेट नॉर्थ के अंदर, और फिर ये जो साउथ वैली है हमारी। तो आपकी इस पे कितनी नज़र है और क्या इसका हमारे पास प्रिपरेशन है? दूसरी बात ये कि चीफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI का दौरा अमेरिका के हवाले से कोई शेड्यूल फाइनल हो गया है या अभी नहीं हुआ? कोई ऐसा दौरा नहीं है, कोई ऐसा शेड्यूल फाइनल नहीं हुआ। मैं स्पेकुलेशन है, देयर इज़ नो सच थिंग। एज़ फार एज हमारी तैयारी कितनी है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। आप दोज डिटेक्ट हुई, ये मिसाइल अगर हवा में था डिटेक्ट हुआ, राइट एट द स्टार्ट हुआ। सो दिस शुड टेल यू कि कोई डिलिबरेटली या इनएडवर्टेंटली कुछ भी पाकिस्तान की टेरिटरी, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, पाकिस्तान की एयर स्पेस की तरफ कुछ भी होता है तो वी आर देयर, वी आर अलर्ट टू इट, वी आर एब्सोल्युटली प्रिपेयर्ड एंड अल्हम्दुलिल्लाह नथिंग misses our watch. That's it. Faisal Raza Khan. Bismillahirrahmanirrahim. Faisal Raza Khan, sir, senior correspondent, 92 News se. Sir, we have seen over the years the irresponsible behavior of Indian state in our east, particularly when we go through their nuclear stockpiles and the fissile material which was already transported to many neighboring countries, the black market and all that. So when we have clear indication that S-400 is there in our neighbor in Pokhran, there are exercises, that is the center of Indian military exercises most probably, particularly regarding Air Force and their military. So when a projectile of such kind comes to Pakistan, and do you think that this irresponsible behavior of in East would not only very dangerous for Pakistan but also for the neighboring countries? Number one. And the second is that our two of the very important strategic bases, Bulari and PF base Rafiki, these are right at our eastern border. And the projectile which was fell in Mia Channu, that was very much nearer to PF base Rafiki. So how do you see that aspect? Because might be there would be something to deliberately send that projectile into Pakistan to assess our defenses and also to assess the strategic capability of Pakistan. Thank you, sir. As I told you, we are not claiming anything right now. Like a responsible nation, as we've already done this before, we will wait for them to respond. As I said, whatever has happened, we have given the details of what has happened, whatever we know of right now, but it is for the Indians to explain what happened. As far as the safety and security of our installations in these areas is concerned, as I said, whatever procedures were to start, whatever tactical actions had to be taken, they were taken. Whenever there are any movements across the border,
may those be training movements, may those be operational movements. We are keeping a very close watch, and our safeguards are always in place. And as I said, we don't miss any signs. And thankfully, we've been up to the task. Our armed forces, our Air Force, our Navy, our Army, everybody is alert and alive to the threat that we face and the challenges that we face. Thank you. سر اس میں ایک سب سے پہلا سوال جو کل یہ چیز رپورٹ بھی ہوئی ہے, ایک سوال یہ اٹھا کہ واز اٹ واز بینگ کیریڈ ان ٹو دی پاکستانی ایئر اسپیس اور اٹ واز لانچ فرام دی انڈین سائڈ, اور اگر یہ کیریڈ تھا یو اے وی کا اس میں ایک ذکر آیا تھا کہ ان مینڈ ایریل وہیکل ہو سکتا ہے جس کو کیری کر رہا تھا, تو دیر واز اے کنفیوژن لائک اٹ واز کیریڈ بائی سم تھنگ اور اٹ واز لانچ بائی سم تھنگ, اینڈ It wasn't carried by something. It was launched from the surface, and that is what I've just told you. It wasn't being carried by a UAV or anything. And very quickly, second part of this, our air defense system, since we know that on the other side they have recently installed batteries of S-400, and from the Indian side, when the Prime Minister was in Russia, there was a debate going on that probably Prime Minister of Pakistan was in discussion of acquiring from Russia, acquiring this S-400 system or Su-30 fighter aircrafts as well. So was it a kind of measure to gauge our air defense system by doing this, or what will be our course of action next time? Are we not just countering it, not just tracking it, but we'll respond to such thing like we did on 27th of February? Actually, there are a lot of measures already in place, and the measures in place in times of war or in times of an escalation are different, and in peacetime are different. So the environment is not such کہ اس environment میں کسی قسم کا کوئی اس طرح کا ایکشن کیا جائے. But as I told you that we were very clear کہ یہ ایک آبجیکٹ ہے اور یہ اس ڈائریکشن سے آیا ہے, اس کی کیا سپیڈ ہے, کس ہائٹ پہ ہے اور کہاں پہ آ کے گرا ہے. So whatever responses were required, they were already initiated, and they were well in place. And اگر فیوچر میں جس طرح آپ نے کہا جو ویپن سسٹمز اکراس ہیں, وی آر ویری ویل اویئر آف دیٹ, اینڈ ان کا توڑ کیا ہے وہ بھی ہمارے پاس ہے الحمدللہ. اور ایکوزیشنز اور یہ ساری چیزیں میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, یہ آئی تھنک اٹ از ٹو ارلی ٹو سے اینی تھنگ اباؤٹ دیٹ, بٹ ایکوزیشنز چلتی رہتی ہیں. وی آر کنٹینیوسلی ماڈرنائزنگ our inventory in all the armed services as per the requirements of the day. Thank you. جن صاحب ایک تو نوید اکبر صاحب نے پوچھا تھا کہ کیا ہم نے اس کو گرایا, اگر وہ پتہ چل جائے. دوسرا, انڈیا نے انٹرنیشنل بارڈر کی وائلیشن کی ہے, تو کیا ہم نے اپنے دوست ممالک, اتحادی ممالک اور اقوام متحدہ میں یہ شکایت بھیج دی ہے یا ابھی ہم پروسیس میں ہیں؟ ابھی بتایا کہ فارن آفس کو یہ ساری ڈیٹیلز دے دی گئی ہیں, اینڈ دے ول بی ٹیکنگ اٹ اپ ایٹ دا ریکوزٹ لیول. جس لیول پہ جو بھی جہاں پہ بھی انہوں نے اس کے اوپر بات کرنی ہے وہ کریں گے انشاءاللہ. مار گرایا والی جو آپ بات کریں, جیسے میں نے کہا کہ یہ آبجیکٹ خود گرا ہے, بٹ وی ور ٹریکنگ اٹ اینڈ وی ور ویری ویل اویئر کہ یہ کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے. ٹھیک ہے, I think that should be all. Sir, I would request VM Director just to explain the civil air traffic route for the last time. That is something that is very important, and I would like you to see for yourself کہ یہ کتنا انڈینجر کیا ہے اس نے, کہ اس کا فلائٹ پاتھ کیا تھا اور اس کے ساتھ جو انٹرنیشنل ٹریفک تھی, ایئر ٹریفک, وہ کیا تھی. جس وقت یہ جہاز, جس وقت یہ پروجیکٹائل پک ہوا ہے, اس وقت 2 ایئر وے راؤٹس رائٹس کے ایکٹیو تھے. اگر ہم اس کے پوائنٹ آف اوریجن کو دیکھیں تو اس سے 78 کلومیٹرز کے ڈسٹینس کے اوپر دس از اے ویری بزی روٹ, جس کے اوپر جہاز, کمرشل پیسنجرز فلائٹس چل رہی تھیں, جس میں انٹرنیشنل کیریئرز بھی تھے, قطر ایئر ویز, سعودی ایئر ویز, انڈین ایئر لائنس کے بھی جہاز تھے, and they were in the east-west direction.
जब ये पाकिस्तानी एयर स्पेस में प्रोजेक्टाइल दाखिल हुआ है तो उस वक्त ये एक एयरवे राउट है जो कि लाहौर, कराची और इस्लामाबाद इनके दरमियान करता है, और ये भी एक इंटरनेशनल राउट है। और इस वक्त इस पे भी एक इंटरनेशनल फ़्लाइट और 3 डोमेस्टिक फ़्लाइट्स ऑपरेट कर रही थी। अगर आप इसके प्रोजेक्टाइल की स्पीड को मद्देनज़र रखें और हाइट को मद्देनज़र रखें तो 40,000 फीट की बुलंदी के ऊपर ये प्रोजेक्टाइल था, जबकि जितनी एयरलाइंस जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ ये भी 30-35,000 से 42,000 फुट की बुलंदी पे परवास कर रहे। और जितनी एक इसकी स्पीड है मार्क 3 के ऊपर, उसके हिसाब से 78 किलोमीटर का डिस्टेंस इधर और इधर 60 किलोमीटर का डिस्टेंस फ्रॉम दिस एयरवे राउट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डेट्रीमेंटल टू द सेफ्टी ऑफ दीज पैसेंजर एंड कमर्शियल फ्लाइट्स। So this is a point which again points to what the DGISPR has said about the disregard of concerns and prerequisites and safeguards for the safety of these international Air Force के बारे में एक सवाल है। Sir, thank you very much. This was the last question. Thank you. DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और ऐसे में उनकी जानिब से कहा गया कि 9 मार्च को भारतीय हदूद से तेज़ रफ्तार चीज़ को रडार पर देखा गया। पाकिस्तान फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स ने इस चीज़ की मुकम्मल मॉनिटरिंग की। हम खित्ते में किसी किस्म की इश्तियाल अंगेज़ी नहीं चाहते। साथ ही साथ ये भी उनकी जानिब से कहा गया कि बज़ाहिर ये सुपरसोनिक मिज़ाइल था, भारत से वजाहत मांग रहे हैं। मिज़ाइल पर कोई हथियार नस्ब नहीं था। 3 मिनट 24 सेकंड तक पाकिस्तानी हदूद में रहने के बाद पाक फ़ज़ाइया ने टेक ओवर किया। DGISPR ने सियासी सवालात का जवाब देने से ऐसे में गुरेज भी किया और उन्होंने जो दहशतगर्दी की नई लहर है इसके ऊपर भी तबसरा किया, इसके ऊपर भी बात की। उन्होंने कहा कि इसकी वजूहात हैं, हम बारहा बता चुके हैं। हमसाया मुल्क में शरपसंद बैठे थे लेकिन अब सूरत हाल कंट्रोल में है, मामला संभाल चुके हैं और ये जो ताज़ा वाक़यात थे इसको भी बहुत जल्द हम सेटल कर लेंगे। DGISPR ने ऐसा कहा। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।